discuss another topic that is something related to the cyberspace. See, there are the different terminology and different technology which we often used, but many a time or due to lack of knowledge or information, we could not understand what the technology we are using. Actually, we are using the technology, but not unknowingly. So here we are just trying to explore the things which we are using in the background. Meanwhile, we are accessing the internet or we are just interacting to someone in this cyberspace. So today's lecture and session will be more focused on this new internet terminology. And there are few more things related to this which we need to keep in mind. Meanwhile, we are interacting with this. So without any delay, I'm just sharing my screen to all of you, and then we will proceed. I hope my presentation is visible to all of you. And my screen is also visible to all of you. Yes, sir. Thank you. So this topic is the cyberspace and the internet terminology. See, if we wish to safeguard ourselves, one need to keep in mind that what kind of technology we are using. I told you the lots of cybercrime and then vulnerability is rectifying or diagnosing with these facts that we are using the technology without the manual. Means we are not, first and all, we are not knowing about the law of land to use the technology. So we are using the applications and software, but we just forget to minimum know about the minimum eligibilities, or we can say the criteria to be fulfilled meanwhile or before we use this kind of tools and techniques. So one thing is that. Another thing is that even though we are just knowing the law aspects, but if we are using the different applications and apps and softwares, but what kind of technology working behind it, if we are aware of that, these are the technology behind this using this app or this kind of facility being online, we will be more aware. We will be using the net same as we were using, but this time with more awareness and more alertness and more secure. So we can safeguard ourselves because we know that pros and cons. If something is happening with us, so what will be the reason and what would be the proposed factors through which one can be easily vulnerable or easily accessible for that cyber criminals or that online predators. So that is why, keeping in this mind, today's lecture we just design accordingly. So I am sharing with you a few things. That is, suppose we are just talking about the cyberspace and all. What is cyberspace? Cyberspace is the connected internet ecosystem, which includes networks, which includes servers, which includes routers, which includes proxy, which includes firewalls, which includes different domains, which includes the different hybrid computers, analog computers, workstations, servers. So this is how usually a network is configured accordingly. So if you permit me that after this lecture, if there will be time available with us, if so, we will I'll show you one video also. But before that, first we will discuss the few things, then we will visualize. So before conducting this session, if I would show you that video, you will not connect to the things which are shown in that video. So after discussing that, you will be now more closely observed and then rectifying the things. Okay, this is that and this is working like this. So cyberspace is a connected internet ecosystem. If we think that the cyber instructions or attacks are dramatically passed in 3 years after the COVID, I would say, or after the 2021-23, last 2-3 years, that exposing the sensitive personal and business information, disrupting the critical operations, and imposing the high cost of the economy. So earlier,
because I was associated with this cyber security and cyber crime investigation programs, training programs for the uh, security agencies, whether it is a police, whether it is a CISF, whether it is a BSF and other agency. So earlier we were discussing, and because I am working since 2012, so now it is more than 13 years. So in the preliminary years, or the in the initial years, we were just thinking in 2013-14 that people are just have the disruptive mind, or that we can say that uh, 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 not the constructive mentality, that people keeping in their mind that they wish to prove themselves, being a hacker or being a cyber criminal. Those who are coming in this field and then try to hack the system, try to access the another person's, we can say, the facility or the software without taking his or her consent, and try to breach their data, sometimes manipulate the data, and sometimes steal the data. But in the previous years, in the 2013-14, we can say, or 15 till 15, that the money is not much involved in that. But now it become economic model. So new, more and more new people who are just looking forward this thread as an opportunity, and then they are just playing with the loopholes of the legal loopholes as well as the technical loopholes. So that is why they are sometimes using proxy servers to hide their IP addresses and try to make the fake IDs of social media profiles, or we can say that fake mail, sometimes the spoof calling, or we can say that spoof SMSs they are just sending and showing the another number. So these are the technology which are very helpful for the corporate people, but it become the curse for the common people. Earlier, when that these technology like remote access applications, so it was a boon for the corporate person. One corporate is one branch is in the Hyderabad, and another branch is in the Bangalore. So it will be that remote access software will be the mode of communication between the two technical person, and one is try to guide the another person how to do the things. So they usually take their another one or another system on remotely accessible, with these installing this kind of AnyDesk or Android, or we can say that TeamViewer, this kind of remote access software. So that were very helpful for the corporate people till 2013-14. But as and when the cyber criminals, or the people who are indulging in this kind of criminal activities or the cheating and frauds, so these cyber frauds, that they took this tool as a opportunity to cheat people. So they are just claiming that they are calling from a call center or a technical advisor, or we can say that a fake customer care department, to make you more available, that they are just promoting this kind of online remote access application, and they foresee you to install this kind of remote access application. And once you install this application called AnyDesk or Android or TeamViewer, so they can easily get access of your system, whether it is a laptop, desktop, or your mobile. So what you are doing on with your screen, they are equally sharing the same screen, and they can see what you are seeing right now. If you are just there is a message of OTP SMSs flashing on your screen, so their screen also able to see all the content available in front of your screen. So that's why that they use these tools, these corporate productivity tools, as a tools to cheat common people. So what are the things which we have to keep in mind? The cybersecurity is protecting our cyberspace, naturally the critical infrastructure, from the attackers, or the from attack, damage, misuse, or economic espionage. So we have to be very vigilant meanwhile we are installing this kind of applications, because we have to keep in mind that these applications not only steal your data, it will give the whole access
of your device to another person who is sitting far away, maybe the 100,000 kilometer away from your PC, but they can do what you can do with your PC with this remote access application. So we have some statistics available with us. So since January to October 2024, there were 10,000 complaints got by the law enforcement agency, naturally the police and crime branch, and then uh, state cyber cell in a in the country, only with the 9 months: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. Only 10 months, and total amount of cheating and fraud amount was 2,148 crores. If we divided with the this amount with the upon 10 for a 10 months, so 201 crore 40 lakhs rupees per month these cyber criminals grab from the common people. And this is the data provided by the National Crime Reporting Portal. Even though in today's scenario also, by the time every day, because you know that there is a ad is going on 2 3 months back on your mobile phones, meanwhile you are making a call to someone, so you have to be, you are bound to hear that sound that for any kind of online fraud, please dial 1930. It's a cyber crime helpline control rooms and number, and please try to keep yourself safe. So this all call which you make on 1930 usually go to the Delhi police, taking care by Delhi police crime branch, and their Delhi police crime branch cyber cell is taking care all those complaints. And even though there is a website of working under the Ministry of Home Affairs, that is something called National Cyber Crime Reporting Portal. The URL of that portal is www.cybercrime.gov.in. So all in all, through the website and through this toll-free number 1930, every day 6,000 complaints are receiving by law enforcement agency per day, and and at the expected cost of more than 70 to 80 crores per day. So this is the cheating cost, means every day people are got cheated, and that amount or figure is more than 70 crores per day. So you can imagine that how, because in a small country, 2,148 crores in 10 months, it's an annual budget of many small countries, 2,140 crores. And this is the amount lost by our countrymen since only 10 months of 2024. So the police and other people are not battling with the normal cyber criminals. Actually, the law enforcement agency is battling hands on hands with the international agencies. So in the digital arrest, when the investigation took place and then law enforcement agency got the various numbers, suspects numbers. So we came to know, we means the police and cyber crime, cyber cell and then crime branch investigated many cases. So many of this call was operating through another countries like Laos, like Vietnam, like Cambodia, like Bangladesh, like POK, Pak occupied Kashmir, and a few parts of Colombo in Sri Lanka, where the army is not much active. So this 2,140 crore rupees, only 40% or 30% is remaining in our country, because they are bound to transfer this money in our Indian accounts. So they just hire the agencies, recruited the people to take the common men's, or we can the people who are just living in the below the poverty line, take their accounts, saving bank accounts or their another bank accounts, cooperative bank accounts, to transfer this kind of money and give them a 2%, 3%, or 5% commission on the whole amount.
So 2,000 rupees for per transaction, or 5,000 rupees, or 10,000 rupees per transaction, and lakhs and crores of rupees they transfer in their account, and rest the amount only cut their share 5%, 10%, and then rest 70 to 80 to 90% amounts shifted through a cryptocurrency to these international gangs, which is operating from Laos, from Cambodia, from Vietnam, from Colombo means just not the Jakarta, near to the Colombo region, and uh, the epic center which are associated with them, they are from Andhra, they are in our country, Andhra and West Bengal, and that the regional or coastal area of the UP and Madhya Pradesh and Rajasthan, that is the Mewat region. So you can imagine that this is not the normal criminals that we are battling with. These are the, we are just actually dealing with the anti-national terror funding, because all these amounts of 80% amount of 2,140 crores naturally goes to these countries, and these countries are just using and then investing on the arms and ammunition, purchasing arms and ammunition, and again send back to our country through POK, through Nepal border, or through West Bengal, or through another coastal area of our country. And our money is against using by our enemies against us. So this is the irony of that thing, because we are closely observe that why and how it is happening. So we just find out, we means the security agency found out there are few softwares through which they are just converting this money or transferring this money to the cryptocurrency. They are Chinese software, naturally provided by the Chinese government. So their involvement is also there. So we are surrounded with the not only the national threats, but we are also facing with the international threats. That's why the cybersecurity is the individual responsibility. No elected government, I told you yesterday also, no elected government, whether any party government, or no agency, or no uh, law enforcement unit may protect you. It is you, it is between you and your device. Suppose if 1 a.m. in the night, if I got a phishing mail or phishing URL or phishing link, it is me, only my prudence between me and my device. No, my friend, neither my friend, nor my relative, nor my parents, nor my husband, nor my wife, nor my any other technical friend or any other security agency may protect. It is only your own prudence will protect you with this kind of threats. So we have to keep make ourselves capable of to think and use our prudence wisely. Now, we were talking about the different internet terminology. In that terminology, the first thing is called URL. URL, the full form of URL is Universal Resource Locator, or sometime it is also considered as a Uniform Resource Locator. This is nothing but the actual path of a particular web address. So what is the anatomy? What is the bifurcation of this URL? There are majorly three parts. One is the protocol, as in when we type www.google.com, this is the URL. Automatically, it is showing us that HTTP before that www. So this is the protocol we are using. So what is protocol then? So protocol, we know that protocol in English, protocol meaning and some code of conduct, some rules, some regulations, some guidelines provided by the higher authority to be followed by each and everyone. That is something called protocol. So there is a one agency called W3C. That is in full form of W3C is World Wide Web Consortium. W3 means World Wide Web. WWW, that is W3. C is for consortium. So this is the agency which is responsible to make all the rules, regulations for go online, for using internet worldwide. So that W3C has make a bunch of rule. That is something called group of protocol, or in a technical language we used to say a protocol suite. Suite means a group, a bunch. So there is a one
protocol, something called. See, I used to prefer hands-on practice instead of only talking about theoretical. TCP/IP protocol suite. Suite means group. So there's a one protocol group that is something called TCP/IP. TCP, the full form of TCP is Transmission Control Protocol, and IP is for Internet Protocol. So TCP/IP, or we can say the Internet Protocol. What is TCP/IP? So it is not a one protocol; it's a group of protocol. इन हिंदी ऑल्सो इट इज शोइंग इन द गूगल. नेटवर्किंग की तकनीकी रोजमर्रा जिंदगी का अभिन्न अंग है, बन गई, जिसके कारण ऐसे इसमें नेटवर्क में तकनीकों को समझना जरूरी. टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल उन प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स को इस विषय के बारे में बहुत कुछ सिखाता जिन्हें आईपी एड्रेस का कोई ज्ञान नहीं है. So that is why I started with the TCP/IP protocol. So TCP/IP प्रोटोकॉल इज ए प्रोटोकॉल सूट. अब इसमें कौन कौन से अलग अलग प्रोटोकॉल्स आते हैं, मैं एक आपको इमेज के थ्रू समझा रहा हूँ. इट विल बी मोर गुड फॉर यू. There is a, not one protocol, it's a bunch of protocol. Oh, no. So we do not need any video related to that. I need only the diagram. Yes. So I wish to show you the diagram of TCP/IP protocol. So TCP/IP protocol is comprises with many protocols. It's a description. We do not need description of this protocol. Otherwise, it will be more technical for you people, which I do not want that to make you people indulge in more technical things. So we can take a simple example of that. So this is the TCP/IP protocol suits diagrams. If I hope my screen is visible to you, I can make more zooming. So this is not only one protocol, this is a group of protocol. So that FTP is one of the protocol, that is file transfer protocol. SMTP is simple mail transfer protocol. DNS is domain name system. SNMTP means simple network mail protocol. Then that RIP is also there. Then Ethernet, token ring, there are different protocols available. So user datagram, UDP is also there. User datagram protocol is also part of that TCP/IP group. So meanwhile, we are using the internet. We are not aware of that, but actually you are using the TCP/IP. Not only you and me, each and everyone who is using internet in this cyberspace, they are using TCP/IP, but unknowingly. In the background, it is coming. That is why once we go to the Google and type google.com, we just type the name of the website google.com, automatically it is coming HTTPS. This is also a protocol coming under the TCP/IP protocol suite. That HTTP full form is Hypertext Transfer Protocol. So now we are again coming to our presentation. I think you got my the idea of to telling you what is the protocol suite.
Once a minute. So I think there is some issue in my presentation. Slides are not coming properly or something. Fine. So first protocol is the atomy of URL. So we can take example of this picture. So this is one URL starting with HTTP. So HTTP is the protocol which is responsible to go online. If we are using internet, automatically you will be redirected to the hypertext transfer protocol. If you are using email, so you just go to the Gmail and using the email, sending someone to your text message or on through email. So automatically we will be convert or we will be shifted to another protocol, that is something called SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Many of you may be aware of that people in corporate use the Outlook Express. Am I audible to all of you? मेरी आवाज आ रही सभी को? Yes, sir. ओके फाइन. सो आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि आप कॉर्पोरेट में हम लोग सिंपल जीमेल या इस तरह के मेल कॉन्फ़िगर नहीं करते, वहां पर आउटलुक एक्सप्रेस यूज करते हैं. एंड उसमें क्या होता है कि जितनी भी आपको मेल आती है, यू कैन रिसीव ऑल द मेल इन अ सिंगल क्लिक. जैसे एक कंपनी कॉर्पोरेट को पर्टिकुलर पर डे पे 70 to 80 और वी कैन से इन राउंड फिगर 100 मेल्स पर डे आती है. सो वो हर बार इनबॉक्स में जाएगा जीमेल में और एक एक मेल को खोलेगा अलग अलग टाइमिंग में. इंस्टेड ऑफ दैट वो सुबह नून में सेकंड हाफ में मेल खोलेगा, एक बार मॉर्निंग में खोलेगा और रिसीव ऑल करेगा. और जितने भी क्वेरीज से रिलेटेड उनकी प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोडक्ट लाइन या फिर अदर फॉलोअप जो मेल होगी वो एक साथ रिसीव हो जाएगी. अनदर थिंग इज दैट इफ अ कॉर्पोरेट इज रिसीविंग अ मेल 50 मेल एट अ टाइम, तो 50 मेल्स को पढ़ने का टाइम तो उनके पास नहीं है, उसके फिर रिप्लाई भी बनाना है. लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी रिप्लाई बनाएंगे तो उसको फिर ऑनलाइन होना पड़ेगा. To avoid this kind of situation, corporate are using configure the Outlook Express. Outlook Express will give you a privilege and facility to store the online mail into a your native PC और कंप्यूटर. आप उस ऑनलाइन मेल को जो भी मेल में जो भी आया है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और वो आपके हार्ड डिस्क पे सेव हो जाएगा थ्रू आउटलुक. अभी अब आपको ऑनलाइन रहने की जरूरत नहीं. सिंगल क्लिक, यू जस्ट क्लिक ऑन वन क्लिक, रिसीव ऑल, यू विल गेट ऑल द मेल इन योर इनबॉक्स. अब वो आपकी हार्ड डिस्क में सेव हो गया.
अब आपको जब टाइम मिले, अब आपको ऑनलाइन रहने की जरूरत नहीं, आप ऑफलाइन हो जाओ, और जितना टेक योर टाइम टू रीड दोस ईमेल्स और उनके आप रिप्लाई बनाकर, अगर सेम रिप्लाई देना है किसी सारे वेंडर्स को या सारे आपके क्लाइंट्स को, देन यू कैन मेक द सेम रिप्लाई एंड क्लिक ऑन सिंगल क्लिक सेंड टू ऑल, तो वो सारा जो आपका रिप्लाई है वो सभी को चले जाएगा। सो इट विल सेव योर टाइम, क्योंकि जितने टाइम पर आपको वो रिप्लाई बनाना था या उसको पढ़ना था, उसको समझना था, उतने टाइम पर यू नॉट नीड टू बी ऑनलाइन। सो ये फैसिलिटी आपको मिलती है जब आप आउटलुक एक्सप्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। नाउ इंटरनेट पे जाने के लिए आपको प्रोटोकॉल लगता है HTTP, पर टू एंड मेलिंग के लिए आपको प्रोटोकॉल लगता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बट नाउ यू विश टू स्टोर ऑल द मेल्स इन योर नेटिव कंप्यूटर, नेटिव पीसी, जो भी जिस भी पीसी पे आप बैठे हैं वहां पर, या फिर अपने मोबाइल फोन में आप उसको आउटलुक को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आपके मोबाइल फोन की मेमोरी में सारी मेल सेव होती है। फिर आपको इंटरनेट की जरूरत भी नहीं होती जब तक आप रिप्लाई, आपको फिर सिर्फ पुश के लिए, मतलब जब आप उसको सेंड बैक करेंगे तभी इंटरनेट की जरूरत लगेगी। मीनवाइल यू आर मेकिंग द रिप्लाईज, तब तक आपको पढ़ने के लिए, मेल को पढ़ने के लिए आपको ऑनलाइन होने की जरूरत नहीं है, इफ यू कॉन्फ़िगर द आउटलुक एक्सप्रेस। बट here, if you are using Outlook Express, you need to shift yourself from SMTP protocol to another protocol, that is something called POP3 protocol. The full form of POP3 protocol is Post Office Protocol 3. So POP protocol means पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस, जैसे आप पोस्ट हमको आ जाती है हमारे पास, हम आराम से उसका फिर रिप्लाई लिखते हैं, फिर उनको वापस पोस्ट कर देते हैं, रीपोस्ट कर देते हैं। सो in this online world, if you wish to be online with the Gmail or Rediff mail or any other times, indiatimes.com mail or any other hotmail, you need an internet connection. Meanwhile, you are accessing your email. But if you configure the Outlook Express, you do not need all time to be online all time. Meanwhile, you are reading or you are making the replies of your email. But in that case, you need to use another protocol, that is POP3 protocol. So here the idea is to telling you all these protocols, the importance of all these protocols. तो यहाँ पर ये HTTP एक अकेला प्रोटोकॉल नहीं है, FTP भी एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी एक प्रोटोकॉल है। अब जब हम सिंपल मेल में कोई फाइल भेजते हैं अटैचमेंट में, तो हम मेल के थ्रू भेज देते हैं। बट somehow, suppose if you are in the online share market or online trading business, maybe it is MCDX or maybe it is on commodity or maybe in आप स्क्रिप्ट में डील करते हैं, आप शेयर्स में डील करते हैं। सो यू नीड टू बी keep eye on the market, naturally the Mumbai Stock Exchange and then the National Stock Exchange, NSE and BSE. So NSE बंद होता है 3:30-4 बजे, BSE बंद होता है 3:30-4 बजे, NSE बंद होता है 4:30-5 बजे। फिर थ्रू आउट द शाम की 5 बजे से लेके 8 बजे तक जो भी दिन भर में जो मार्केट का जो भी ट्रेंड रहा है, ऊपर गया है, नीचे गया है, this all share market people, the broker or the people who dealing in the share market, they used to download the whole day summary from NSE and from to BSE server, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से वो फाइल डाउनलोड करते हैं। दैट फाइल इज कंप्राइजेस ऑफ मोर देन 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB। और 5 GB की फाइल अगर आपको डाउनलोड करना है, देन आपके मेल पे तो जब आप अटैचमेंट करते हैं तो 20 MB से ज्यादा पे वो मना कर देता है। आपने देखा होगा जब अटैचमेंट आप मेल पे भेजते हैं किसी को, देन यू हैव अ लिमिट दैट नॉट मोर देन योर फाइल आर नॉट सपोज टू मोर देन 20 MB। तो 20 और 25 MB के बीच में ही आप जीमेल पे भेज सकते हैं, जो आपकी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की लिमिट है। बट व्हाट अबाउट 1 GB और 2 GB, 3 GB? देन यू नीड टू यूज FTP protocol, that is something called file transfer protocol, the protocol which is responsible to transfer the big size file from one server to another server, one PC to another PC. तो आप सर्वर पे से ये लोग जो NSE BSE से सर्व डेटा जो दिन भर का ट्रेंड उठाते हैं, एंड देन दे यूज टू एनालाइज दैट ट्रेंड, ताकि वो फ्यूचर की मींस टुमारो, अपकमिंग टुमारो की वो प्लानिंग कर सके कि आज मार्केट ऐसा था, या लास्ट वीक सैटरडे को वो डाउनलोड करते हैं पूरे वीक की फाइल,
बैकअप लेते हैं और पूरे वीक का ट्रेंड देख के नेक्स्ट वीक को प्रिडिक्ट करते हैं कि पिछले हफ्ते ऐसा रहा था या लास्ट मंथ ऐसा रहा था या लास्ट 2 वीक से मार्केट का ये जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड चला रहा है या रुझान इस तरह का है, तो हम नेक्स्ट 2 वीक या 3 वीक में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या कैसे खुलेगा, वो प्रिडिक्शन करते हैं. दे हैव देयर ओन टूल्स. दिस इज नॉट एन area of concern for us, but I am trying to say you to download this higher size file. We need to use another protocol through internet, that is FTP, file transfer protocol. So we are fully surrounded by the different protocols. So this is the first segment, or we can say the first part of any URL. कोई भी URL होती है तो उसका सबसे फर्स्ट पार्ट होता है protocol. So HTTP, now you got my idea. The HTTP is a protocol, and protocol क्या होता है? I explain you very well. Not only the HTTP, there are other protocols also there. POP protocol is there, FTP is there, Simple Mail Transfer Protocol, SMTP is also there, and User Datagram Protocol, UDP is also there. So these all protocols are coming under the flagship of TCP/IP protocol suite. ये सब इसके अंदर ही आते हैं. So this TCP/IP is responsible to make you online in the internet. That is the first part on this in this anatomy. Second part आता है आपका डोमेन. तो सब डोमेन क्या है? सब डोमेन मतलब आपकी कंपनी का नाम. तो HTTP तो हो गया प्रोटोकॉल, देन www डॉट. तो www डॉट तो पता है सभी को, वर्ल्ड वाइड वेब, एंड डॉट गूगल इज द सब डोमेन जो कंपनी का नाम है, एंड डॉट के बाद के 3 डिजिट हैं, दैट इज द डोमेन नेम. डोमेन नेम स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द कंपनी. जैसे मैंने आपको बोला कि ये साइबर अपराध हो रहे हैं, तो यू आर नॉट सपोज टू प्रोवाइड मच डेटा अबाउट यू इन एनी ऑफ द सोशल प्लेटफॉर्म. तो कौन कौन से सोशल प्लेटफॉर्म है? स्टार्टिंग विद द फेसबुक, बिकॉज फेसबुक का यूआरएल क्या है? www डॉट फेसबुक डॉट, डॉट के बाद क्या है? कॉम. सो डॉट के बाद जो 3 अल्फाबेट हैं वो किसी भी वेबसाइट का, किसी भी यूआरएल का नेचर बताते हैं कि वो किससे रिलेटेड है. सो सपोज इफ योर, तो मैं यहां पर आपको ऐसे समझाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज यू विल मिस द बस. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. सभी को दिख रही है? Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay, fine. So suppose my company name is first, my URL is starting with the HTTP. Then www dot, that is subdomain. My company name is ABC. Dot com. I hope my screen is visible to all of you. या फोन साइज और बड़ा करूं? Is it visible to all of you? आप सबको स्क्रीन दिख रही है? कोई मुझे यस बोले प्लीज. Yes, yes. Okay, fine. So HTTP is the protocol.
www.abc is the subdomain and the main domain is dot after the dot, that is .com. So com is for this, that domain shows me the nature of the website. If a website is comprised with .com, means it's a commercial website. Commercial website means the main sole purpose of that website is to selling and purchasing and to make the more and more profit. Their sole purpose and their motto is to make profit. That is why it's considered as a commercial website. So that's why I used to say, please do not share your much information on Facebook, because Facebook is www.com. Do not share the information, much more information on LinkedIn, because LinkedIn URL is https www.linkedin.com. It's again commercial website. Then WhatsApp is also .com. What Google is also .com. So these all websites are. Twitter is also .com. Instagram is also .com. So dot after the dot, that three alphabet will say the nature of the website. If your website is comprises with .org, it means you are an organization which motto is not to make profit. Means you are here in the social cause. Means non-profitable organization. So if a website is comprises with .org, means their sole purpose and sole motto is not to make profit, because they are in the business with some social cause. That is why non-profitable organization. So .org will be used by those organizations. If your organization is belongs to government, or .gov will be your domain. Means your, it simply says that ABC is the government website, because www.abc.gov means it's a government website. If your domain or your URL is comprises with .edu, means you are an educational institution, means dealing in education, maybe some course, some online courses, some kind of workshop, some kind of uh, uh, study material, some kind of study guidance you are providing. That is why you opt that domain name .edu. If your website is comprises with .ac, means you are an academic institution. Again, you are dealing in the indulging yourself in the field of education. If your website, maybe the name will be the same, but the domain name say the nature of the website. If your domain name is .mil, means you are a military organization. You are working for the military, means the forces, paramilitary forces. Suppose if you are a foreign website, only then your URL is comprises with your country .us in the case of United States of America, .uk in the case of United Kingdom, London. If it belongs to Australia, .aus. So accordingly, and if you are a commercial website working in India, so the country, nowadays country domain is also apply after the main domain. So .com, .in, .org, .in, and .gov, .in, .edu, in for India, .ac, .in, .military, .in means you are a Indian military services. So now you got the anatomy of the URL. So on the basis of the URL, you can know about the website, the organization, what kind of business they are dealing with. This is the a normal anatomy of a URL. There are detailed. Suppose if any file is stored on that particular, so this is the website / document. If a document, a PDF is created on that portal, and then document name A1, and
if the website PHP file, so that PHP. So this URL says that you are an Indian company which dealing in the commercial business, because you are opting the .com, your name is ABC, and this website is having a document file called A1. So this is the full path of that particular file. वो कहाँ पर पड़ी है? This URL say each and everything. Why so this URL is important? Nowadays, cybercrime, our topic is to make people capable of to battle with the cybercrime. So the first scene, if you first seen the URL, if you are getting this URL through any of the social media, you may get this URL. URL को हम another वर्डों में link भी बोलते हैं. So you are getting this link or URL through SMS. आपको डाउट आएगा, आप उसको पूरा पढ़ो, कहाँ से रिलेटेड है, इसका डोमेन नेम क्या है, कौन सी कंपनी है, क्या डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर, किस नाम का है. If you are getting this URL or link through WhatsApp, please rectify. If you are getting this link or URL through email, so please check that also. If you are getting this link through a DM on Instagram, तो वहां पर भी चेक करिए. तो आपको URL देख के पता चल जाएगा. नाउ अभी कई बार ऐसा होता है हमारे पास कुछ URL ऐसी आती है जिससे कुछ भी पता नहीं चलता, ना तो कंपनी का नाम पता चलता है, ना तो डॉक्यूमेंट क्या है पता चलता है, बस कुछ कुछ फिगर्स लिखे रहते हैं. This kind of URL are known as messy URLs. Messy मतलब उसको देख के कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उसको देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो अब ऐसी URL आपके पास आ गई, और मैं यहाँ पर आई एम नॉट कमिंग हियर और वी आर नॉट कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग दिस वर्कशॉप ओनली टू मेक यू पीपल अफ्रेड, टू मेक अ फियर इन यू, मेक अ डाउट ऑन ईच एंड एवरी URL. तो अब आपको चेक करना है कि अगर मेरे पास ऐसी कोई मैसी URL आती है तो व्हाट आई सपोज टू डू, मुझे क्या करना होगा, कैसे चेक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ मैं. तो व्हाट यू नीड टू डू कि अगर तो आपके पास उसकी पूरी एनाटॉमी है, देन यू कैन चेक द कंपनी नेम, यू कैन चेक द डोमेन नेम, यू कैन चेक द कंट्री फ्रॉम विच दे आर कमिंग. अगर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कॉपी दिस URL, कंट्रोल C कर लिया. अभी एक पोर्टल आप लिखिए, मैंने आपको बताया था नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गूगल पे नेशनल, ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल. मैं इस पे क्लिक करता हूँ. द फर्स्ट URL आई गॉट नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसकी URL है https://www.cybercrime.gov.in. मैं इस पे क्लिक करता हूँ. अब इस पोर्टल में एक नया 3 month बैक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस अ न्यू ऑप्शन और न्यू टैब. वो कहां से आएगा, यहां पर जाऊंगा मैं. थर्ड टैब है, फर्स्ट टैब इज रजिस्टर्ड कंप्लेन. ये जब आपको यूज करना है जब आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो जाए. तो अगर वुमेन्स रिलेटेड चिल्ड्रन और चिल्ड्रंस रिलेटेड कोई क्राइम है तो आप दो तरह से कर सकते हो. वुमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम में यहाँ पर आपको दिखा होगा, यहाँ पर इस URL में लिखा है रजिस्टर अनोनिमसली. व्हाट इट मींस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑप्शन दिया है कि इफ यू आर ए वुमेन, अगर आप कोई महिला है, यानी इफ यू डू नॉट विश टू रिवील योर आइडेंटिटी, अगर आप अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हैं या चाहते हैं, छुपाना चाहती हैं. क्योंकि ऐसा होता है कि इसको इस तरह की कंप्लेंट्स को स्पेशली इन द केस ऑफ वुमेन और गर्ल्स, पीपल आर सीइंग दिस एज अ सोशल स्टिग्मा, एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है कि जरूर इन्होंने ही कुछ किया हो जो इनके साथ ऐसा कुछ हुआ. तो महिलाएं दे समटाइम हेजिटेट, हिचकती हैं कंप्लेन लिखाने से कि बेफालतू में बिना वजह का ना हमारा नाम आ जाएगा, हम बैडली फेमस हो जाएंगे और इट विल ड्रेसिंग डाउन आवर सोशल रेपुटेशन, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हियर, इफ द क्राइम रिलेटेड टू वुमेन और चिल्ड्रन, तो यहाँ पर लिखा है रजिस्टर अनोनिमसली. आप यहाँ पर अपनी पहचान गुप्त रखे हुए भी, आपसे पूछेंगे भी नहीं कि आपका नाम क्या है. नेचुरली पूछेंगे लेकिन कभी रिवील नहीं होगा. ओनली इन द कोर्ट रूम, किसी पुलिस स्टेशन में नहीं, किसी थाने में नहीं, कोई एजेंसी आपका नाम नहीं बता सकती, वेदर यू आर अनीता, सरिता, ललिता,
मीता और देवजानी, वॉट एवर इट इज, तो कोई आपका नाम नहीं पूछेगा, ना आपका नाम कभी रिवील होगा। इवन पेपर में भी आया कि किसी महिला के साथ फ्रॉड हुआ, आपका नाम कभी रिवील नहीं होगा। सो don't be afraid to file a complaint only because of this, that you are a woman, you are a lady. अगर आप कोई महिला हैं तो आप ये ना सोचे कि मैं करूंगी तो मेरी फैमिली के ऊपर कुछ आ जाएगा, उनकी रेपुटेशन हो सकता है। यू मे बी अ डॉटर इन लॉ, आप किसी अच्छे बड़े घर की बहू हैं, यू मे बी अ वाइफ ऑफ अ रेप्यूट पर्सन, अ सीनियर ऑफिसर, तो लगेगा कि अननेसेसरी में इनके ऑफिस में या मेरे हस्बैंड की भी सोशल रेपुटेशन का इसमें वायलेशन होगा या फिर लॉस्ट होगा। तो यहाँ पर आप रजिस्टर्ड अनोनिमसली करके यू कैन रजिस्टर्ड योर कंप्लेंट एंड द कंप्लेंट ऑफ योर फैमिली मेंबर ऑल्सो। अगर आपकी डॉटर के साथ हुआ है, आपकी सिस्टर के साथ हुआ है, आपकी सिस्टर इन लॉ के साथ हुआ है, आपकी डॉटर इन लॉ के साथ हुआ है, किसी के साथ भी हुआ है, कलीग के साथ हुआ है, आपकी फ्रेंड के साथ हुआ है, आपकी कोई एसोसिएट है उनके साथ हुआ है, और वो नहीं चाहते कि हमारा नाम किसी को पता चले, then you can register report. The government of India is providing you facility की, and the investigation process will be the same. वैसे ही विवेचना होगी जैसे एक सामान्य केस में होती है, वैसे ही कल्प्रेट को पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि कंप्लेन किसने की। ठीक है, तो वो पकड़ा जाएगा, तो आप यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हो। नाउ ये फर्स्ट स्टेप था। दूसरा, फाइनेंशियल फ्रॉड होता है किसी के साथ तो वो यहाँ से कर सकता है, और अदर साइबर क्राइम होता है तो वो यहाँ पर क्लिक करके उसकी फाइलें कंप्लेन कर सकता है। थर्ड नंबर का जो टैब है इसमें लिखा है रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट। एज द नेम स्पेसिफाई, रिपोर्ट और चेक द सस्पेक्ट। आपको सस्पेक्ट को चेक करना है, तो यहां पर एक फर्स्ट टैब है सस्पेक्ट रिपोजिटरी। सो सस्पेक्ट रिपोजिटरी में आपको क्लिक करना है। आप उसको जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे लिखा है चेक सस्पेक्ट मोबाइल और ईमेल, और चेक सस्पेक्ट वेबसाइट और ऐप। तो आप सस्पेक्ट की वेबसाइट और ऐप में क्लिक करेंगे, और यहां पर जो आपने यूआरएल टाइप की थी, तो यहाँ पर लिखा है उसने कि यूआरएल है या मोबाइल ऐप है, तो आपको लगता है कि कोई, आप कोई मोबाइल ऐप की भी यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं जो आपको लगता है कि सस्पिशियस मोबाइल ऐप है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में, इधर और यू मे गो फॉर यूआरएल और यू मे गो फॉर मोबाइल ऐप। तो हमारे केस में तो यूआरएल थी, हम यूआरएल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वो यूआरएल पेस्ट कर देंगे, जो भी यूआरएल थी abc.com, जो भी। ये मैं आपको सिर्फ आई एम गिविंग यू द एग्जांपल। If you are getting this URL or link through any of the social media and you have a doubt that this is the suspect list, ये किसी फ्रॉडस्टर ने भेजी है मुझे ट्रैप करने के लिए, मुझे फंसाने के लिए, तो आप यहाँ पर उसको रिपोर्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर कैप्चा डालना है और आप इसको सर्च करा सकते हो कि आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो कि यूआरएल ऑथेंटिक है या नहीं है। अगर वो ऑथेंटिक नहीं होगी तो वो बता देगा कि ये फेक यूआरएल है, ऐसी कोई यूआरएल नहीं है, ऐसी कोई वेब एड्रेस ही नहीं है, ये आपको फंसाने के लिए दी लिंक। तो प्लीज डू नॉट क्लिक ऑन दैट लिंक। तो जब भी कोई सोशल मीडिया अकाउंट पे आपके पास इस तरह की लिंक आती है, दैट यू आर नॉट सपोज टू क्लिक ऑन दैट लिंक। इंस्टीड ऑफ दैट, अगर आपको ईमेल भी आई है उसमें लिखता रहता है कि प्लीज इफ यू विश टू नो मोर अबाउट दिस क्लिक द लिंक गिवन बिलो। उनका इंटेंशन पूरा यही रहता है। अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी नोटिस आया, एसएमएस आया दैट यार hereby to inform you that income tax department is find depth on your taxable income and so ऐसे कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज में देंगे, और वो पूरा ड्राफ्ट करने के बाद उनका मेन इंटेंशन होगा, लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, प्लीज इफ यू विश टू क्लेरिफाई और सॉर्ट आउट दिस मैटर प्लीज क्लिक द लिंक गिवन बिलो। उनका मेन एम यही है that the reader, the victim supposed to click the link somehow, कैसे भी वो लिंक पे क्लिक कर दे और उसका डिवाइस हम उसका टेक ओवर ले लें, उसको हम एक्सेस कर लें, उसका डेटा हम स्टील कर लें, उसका डेटा हम कॉपी कर लें, या उसके डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज कर दें। तो आपको बिना क्लिक किए उसको सिलेक्ट करना है। बड़े शांति, कई बार सिलेक्ट करने में भी हमसे माउस से क्लिक हो जाती है, तो क्लिक नहीं करना है, उसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके उसको हमको कॉपी करके यहाँ इस पोर्टल पर आना है, और इस पोर्टल पे वो लिंक क्लिक करके देखना है वेदर इट इज अ जेन्युइन लिंक और नॉट। इफ दे शोज नॉट, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है सस्पेक्ट का, तो आप ये कर सकते हैं क्लेम कि दिस इज द ऑथेंटिक। अदरवाइज आप ऐसे लिंक पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करेंगे। एम आई आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एम आई क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, थैंक यू।
Now, coming to another thing. So I think that URL part, how and why URL is important for you. You may got my idea to discuss this thing, because most of the uh, frauds are committing through this kind of phishing link. हम इनको phishing क्यों बोलते हैं? The name of that term is phishing, not the actual word phishing. It's something called phishing, जिसकी spelling F से start नहीं होती है, H से होती है. So phishing. तो phishing attack क्या होता है? phishing में जैसे आपने देखा कि जब कोई भी फिशरमैन किसी भी फिश को ट्रैप करने के लिए एक पूरा नेट फेंकता है एक पर्टिकुलर रेडियस में, लेट अस से 30 to 40 फीट्स इन अ रिवर, और वी कैन से इन अ पूल, एक कोई तालाब में या फिर कोई नदी में एक पूरा जाल फेंकता है 50 to 60 फीट दूर, ऐसा स्प्रेड करता है. हिज इंटेंशन इज नॉट टू ट्रैप ईच एंड एवरी फिश अवेलेबल इन द रिवर. उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि सारी मछलियां आज ही पकड़नी या सारी मछलियों को ही पकड़ना. उनका उद्देश्य होता है उस पर्टिकुलर रेडियस में जितनी भी आ जाए, रैंडमली फंस जाए, वो उनका सरप्लस है. सेम केस हियर. दैट इज व्हाई दिस वर्ड फिशिंग इज इनहेरिटेड विद द एक्चुअल वर्ड फिशिंग. तो फिशिंग अटैक इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम वेयर इज द मलिशियस एक्टर्स impersonate, मतलब वो ऐसा प्रतीत कराते हैं, आभास कराते हैं, legitimate entities to trick the individuals into revealing sensitive information such as the login credentials, financial details and personal data. तो अब आपसे ये मंगाने के लिए वो आपको यूआरएल भेजेंगे या लिंक भेजेंगे. ये यूआरएल आपको थ्रू ईमेल भेजेंगे, थ्रू व्हाट्सएप भेज सकते हैं, थ्रू एसएमएस भेज सकते हैं. अगर आपको फंसाना है उनको तो एसएमएस के थ्रू जब भेजेंगे तो वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भेजेंगे, या फिर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से क्लेम करेंगे कि वी आर सेंडिंग दिस एसएमएस थ्रू ट्राई, और आपका मोबाइल अगले 24 घंटों में बंद हो जाएगा. और आज सैटरडे है और कल संडे है और नेक्स्ट मंडे को गवर्नमेंट हॉलीडे आ रहा है, तो देन इट विल बी 4 days you will be in the deadlock situation. To resolve this matter, please click the link below. हमेशा उनका इंटेंशन यही होगा कि सारा पूरा एक स्टोरी बनाकर आपको ड्रैग करना, पुश करना to click on that particular, and they have created an environment whereby they just claim that there is an emergency, है ना, बिल्कुल आप जल्दी कर दीजिए, अदरवाइज फिर आज पूरा दिन खत्म हो रहा है. और अब ये तो आपको टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू अगर आपको फिशिंग लिंक भेजी, आपको एक एसएमएस ऐसा भी आ सकता है, मैसेज आ सकता है दैट वी आर कॉलिंग फ्रॉम योर कंसर्निंग बैंक ऑफ क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, कि आपका क्रेडिट कार्ड इमीडिएटली इफेक्ट से बंद होने वाला है इफ यू विश टू कंटिन्यू द सर्विसेज, क्योंकि अदरवाइज इट विल टेक 7 to 15 days टू अगेन री-एक्सेस द सर्विस. प्लीज क्लिक द लिंक बिलो एंड अपडेट योर केवाईसी. फिर वही बोलेंगे वो कि आपको अल्टीमेटली करना क्या, लिंक पे क्लिक करना है. सो ये जितनी भी स्टोरी है, चाहे वो ट्राई के नाम पे हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम पे हो, चाहे वो बैंक क्रेडिट कार्ड के नाम पे हो, या बैंक अकाउंट या पेंशन डिपार्टमेंट के नाम पे, एलआईसी के नाम पे हो, मेन मोटो इज टू सेंड यू अ फिशिंग लिंक. फिशिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो 50, 100 और 200 लोगों को इस तरह के एसएमएस भेजते. नॉट एवरीवन इज गेटिंग दिस फिशिंग ईमेल और एसएमएस और दिस काइंड ऑफ डीएम ऑन इंस्टाग्राम. ये सिलेक्टेड ऑडियंस को लिए, क्योंकि एक जाल छोटा होता है मछुआरे का, फिशरमैन का, तो वो 100 रैंडमली 200, 300 लोगों को भेजा जाता है. इसमें से कोई आपके और मेरे जैसे वेल एजुकेटेड लोग हैं तो हम तो इसमें कई बार बच जाते हैं थ्रू आवर जनरल नॉलेज और अवेयरनेस. लेकिन 200 में से आउट ऑफ 200 से अगर 20 लोग भी इसमें इनकी झांसे में आ गए, बात में आ गए, और उन्होंने उस पर लिंक पे क्लिक कर दिया, इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी, अपनी फाइनेंशियल क्रेडेंशियल उनके साथ शेयर कर दिए, वेदर रिलेटेड टू द बैंक और पर्सनल डेटा और लॉगिन क्रेडेंशियल, तो फिर वो उस डेटा का मिसयूज हो जाता है और उनको पता लगता है व्हेन दे मेट एन साइबर क्राइम इंसिडेंट्स, और फिर उनको पता लगता है हमारे अकाउंट से इतने पैसे चले गए. सो दैट बिगिन विद द फिशिंग लिंक. इसलिए लिंक को पहचानना, लिंक को आइडेंटिफाई करना, दैट इज मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट. और कोई भी ऐसी मैसी लिंक अगर आपको लगती है, यूआरएल लगती है, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज यूआरएल. देन यू नीड टू कीप इन माइंड यूआरएल के एनाटॉमी
कि इसके पार्ट क्या क्या होते हैं। अनदर थिंग, एक यूआरएल में एक चीज और होती है, लोग बोलते हैं कि आपको बताते भी हैं कि कोई भी यूआरएल, सपोज मैंने अभी आपको बताया था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में। नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे मैंने क्लिक किया तो इसकी यूआरएल खुली। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, हम इसके पोर्टल पे आते हैं। इसकी यूआरएल जो देखिए आप एड्रेस बार में इसकी यूआरएल देखिए। सो ये इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, बट वो एड्रेस बार उतना ही दिखने वाला है आपको। मैं इसको कॉपी करता हूँ यूआरएल को, फिर आपको बताता हूँ, देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस। तो ये एक यूआरएल जो मैंने अभी कॉपी की है, https://cybercrime.gov.in। अब यहाँ पे http तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। व्हाट दिस एस इज स्टैंड फॉर, लोग बोलते हैं कि आपको देखना चाहिए कि http के बाद एस लगा होना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। तो एस का मतलब सिक्योर होता है। नो, इसका मतलब सिक्योर नहीं होता। एस का मतलब होता है, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। एक सर्टिफिकेट होता है जिसको हम बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट। तो शॉर्ट फॉर्म में हम SSL बोलते हैं, SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट। ये किस लिए होता है? देन नाउ यू हैव टू बी कीपिंग इन माइंड देयर आर 3 स्टेप्स टू मेक अ वेबसाइट। एक वेबसाइट बनाने के देयर आर 3 स्टेप्स। वन इज टू मेक द फ्रंट एंड। ये किस तरह का फ्रंट एंड, मतलब हाउ योर वेबसाइट विल बी लुक लाइक। सो आज के समय में तो वेबसाइट डिजाइनिंग इज वेरी इजी टास्क। जैसे हमारे पास आप MS पावर पॉइंट में हमारे पास टेम्पलेट्स होती है, मतलब आपको हर स्लाइड्स को डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जाएंगे, अपना MS ऑफिस खोलेंगे, MS ऑफिस में यहाँ पर जाएंगे, न्यू में जाएंगे, और न्यू में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास टेम्पलेट्स होती है। ये दिख रही टेम्पलेट्स आपको ऑनलाइन, आप और सर्च भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंटेशन। आपको कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन देना है, कौन से किन किन किस ऑडियंस को मेडिकल प्रेजेंटेशन देना है, तो देयर विल बी कैटेगरीज ऑल्सो। तो आप यहाँ से कोई भी एक थीम सिलेक्ट कर लेते हो जिसको हम टेम्पलेट बोलते हैं, और आप उसमें सिर्फ अपना डेटा, वो पूरी आपको डिजाइन मिल जाती है PPT की, और आप उसमें सिर्फ अपनी फील्ड्स भर देते हो, अपनी कंपनी का नाम, कंपनी का मोटो, उनका विजन, उनका मिशन, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, उनके गोल्स, और आप प्रेजेंटेशन दे देते हो। और अपना खुद खुद का जो स्टैटिस्टिक्स होता है, कुछ डायग्राम्स, कुछ एक्सेल शीट से कुछ आप ग्राफ्स या चार्ट उसमें डाल देते हो, एंड यू प्रेजेंट वेरी वेल। सो टेम्पलेट आपका टाइम बचाती है। कभी भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो तो इट विल सेव योर टाइम। वैसे ही आज के समय में वेबसाइट में भी टेम्पलेट्स आ गई हैं। सो एक टेम्पलेट्स, वर्ड प्रेस, अगर आपने नाम सुना हो तो, वर्ड प्रेस। एक और चीज है जुमला। सो you can use either the Joomla or WordPress, the templates. So templates will give you the different looks or different फ्रंट एंड्स, कि आपकी वेबसाइट बाहर से कैसे दिखेगी, तो आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। नाउ अनदर थिंग इज दैट, अब आपने फ्रंट एंड तो बना लिया, अब आपको अपनी वेबसाइट का नाम रखना है। तो मैंने आपको बताया कि आपके एनाटॉमी क्या होती है वेबसाइट की। तो हमने एक वेबसाइट बनाई, साइबर वॉरियर नाम की, या साइबर सखा।
साइबर मित्र भी बोल सकते हैं, साइबर सखा, क्योंकि ये एकेडमिक्स है, एजुकेशनल है साइबर सखा, तो हमने इसको नाम दिया साइबर सखा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे एक डिजाइन टेम्पलेट डिजाइन करना पड़ेगी मेरी वेबसाइट के लिए कि मेरी हाउ माय वेबसाइट विल लुक लाइक। अनदर थिंग इज दैट मुझे ये साइबर सखा नाम जो है, इस नाम को इस डोमेन के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा नेचर बताएगा मेरी वेबसाइट का कि वो एकेडमिक्स है, ये एजुकेशनल है या कमर्शियल है। तो फिर मैं यहाँ पे इसको कॉम कर दूंगा, ताकि मैं कुछ कोर्सेज बेचूंगा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो मैं इसको साइबर सखा .com कर देता हूँ। या फिर अगर मैं कोई साइबर सखा नाम से कोई एनजीओ स्टार्ट कर रहा हूँ तो .org कर दूंगा मैं। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ये, मैं हम लोग सेवा के कार्य करेंगे कुछ इसमें। तो मुझे अपनी जो भी नेम है मेरा सब डोमेन जो है, उसके साथ मेन डोमेन के साथ मुझे अपनी वेबसाइट का नाम रजिस्टर करना पड़ेगा। सो इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। तो आपने, ताकि फिर ये नाम कोई दूसरा यूज ना कर सके, जैसे हम कॉपीराइट करते हैं या कोई गुमाश्ता लेते हैं, कोई हमारी शॉप के नाम से हम रजिस्टर्ड कराते पेटेंट किसी नाम से, तो कोई दूसरा, जैसे अभी हमारे यहाँ पर एक बड़ा चल रहा है ट्रेंड इंदौर में, बिकॉज आई एम बिलोंग्स टू इंदौर मध्य प्रदेश, एक चाय वाला एक आउटलेट चल रहा है, या तो उसने अपनी फ्रेंचाइजी देना शुरू की, तो उसके अलावा चाय वाला, एमबीए चाय वाला कोई दूसरा यूज ना कर पाया, तो उसने उसको पेटेंट करा लिया सेम। तो उसने अपनी वेबसाइट को भी रजिस्टर्ड कराया हुआ, एमबीए चाय वाला .com या समथिंग। तो फर्स्ट थिंग इज टू डिजाइन वेबसाइट, सेकंड थिंग इज डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। अब ये दो चीज तो हो गई, वो नाम भी मैंने सिक्योर कर लिया कि ये साइबर सखा कोई नाम दूसरा नहीं रख सकता, उसका मैंने डोमेन भी फिक्स कर दिया .org .com या .ac या .edu, एजुकेशनल के लिए है या फिर बेच कमर्शियल है या फिर नॉन प्रॉफिटेबल। थर्ड थिंग, अब मुझे एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जिसपे मेरी वेबसाइट आप आधी रात को भी उसको खोलें तो वो कंप्यूटर बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अभी आप लेट नाइट भी उसको देख सकते हैं। इवन इफ समबडी इज लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो हमारे यहाँ पर वहां पे 13.5 घंटे का डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ जब दिन होता है वहां रात होती है, तब वहां रात होती है, हमारे वहां दिन होता है। तो हमारे वहां रात की 11 बज रही है, वहां शायद सुबह के 9 बज रहे हैं। तो वहां सुबह मॉर्निंग में कोई देखेगा तो मेरा वेबसाइट बंद नहीं होना चाहिए। तो आई नीड वन पीसी जो 24/7/365 ऑन एंड ऑन रहता हो, कभी बंद नहीं रहता हूँ। ऐसे कंप्यूटर को, ऐसे पीसी को हम बोलते हैं सर्वर। ऐसा सर्वर दुनिया भर की वेबसाइट है उस पर स्टोर होती है, ताकि कोई दुनिया भर से कोई कभी भी इसको एक्सेस करे वो चालू मिलेगा। तो उसको हम वेबसाइट उस पर स्टोर रहती है, इसलिए उनको वेब सर्वर बोलते हैं। तो मैं अपनी वेबसाइट को पूरी उठाकर इसका पूरा डेटा, उसकी एक कॉपी उस वेब सर्वर पे स्टोर या सेव कर दूंगा। उसके लिए मैं उस वेब सर्वर पे एक जगह खरीदता हूँ, उसको हम बोलते हैं वेब सर्वर नेम स्पेस, मतलब वेब सर्वर पे स्पेस खरीदना। उसका मैं उसको हर साल का कुछ रेकरिंग अमाउंट, कुछ 5,000 10,000 रुपए हर साल का मैं उसको दूंगा, ताकि, क्योंकि मैं उसकी जगह यूज कर रहा हूँ, उसका सर्वर यूज कर रहा हूँ। तो 3 स्टेप्स है, वेबसाइट डेवलपमेंट, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन एंड सर्वर परचेस सर्वर स्पेस। ये 3 प्रोसेस होती है। अब चौथी प्रोसेस ये कि अभी भी मेरे नाम की वेबसाइट के नाम के आगे HTTP के बाद एस नहीं लगा है। ये एस कब लगेगा? एज एंड व्हेन आई विल गेट, जब तक मैं SSL सर्टिफिकेट नहीं लेता हूं गवर्नमेंट से। तो SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, मैं आपको एक और टैब से दिखाता हूं। यहाँ पे लिखूंगा मैं SSL सर्टिफिकेट। अब क्या होता है SSL सर्टिफिकेट? An SSL certificate, more accurately called the TLS certificate, a digital certificate that authenticates a website's identity and enables the encrypted connection, ensuring secure data exchange between the user, browser and website server। ये बताता है कि इस वेबसाइट पे अगर कोई भी व्यक्ति विजिट करेगा या इस पर कोई भी व्यक्ति इसके डेटा को देखेगा, तो यहाँ पर उसका सेशन पूरा इंक्रिप्टेड रहेगा। जो व्यक्ति विजिट करने वाला है उसको कोई हार्म नहीं होगा, उसका सिस्टम हैंग नहीं होगा, उसका डेटा कभी भी करप्ट नहीं होगा। तो ये वेबसाइट पूरी तरह सेफ एंड सिक्योर है। तब आप
SSL सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं और उसका तुमको 1,200 रुपीज पर ईयर ये हर साल लेना पड़ता है वेबसाइट को. नाउ द कंपनीज आर टेकिंग दिस SSL सर्टिफिकेट एज ए देयर स्टेटस सिंबल और देयर रेपुटेशनल सिंबल. तो जिस तरह जैसे पहले हमारे यहाँ पर आज से 10-15 साल पहले हम लोग ISO का बड़ा क्रेज था, ISO 9000. हमारा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसके लिए भी हम ISO 9000 लेते थे, 9002 लेते थे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए. तो वो हमारी क्रेडिबिलिटी बताता था मार्केट में कि हम वी आर ऑथेंटिक वन, हम वी आर फॉलोइंग द क्वालिटी एश्योरेंस, कि हम क्वालिटी हमारे वहां मैनेज की जाती है, इसलिए हमने हमने वी हैव गेट दैट ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन. सो वेबसाइट के लिए SSL सर्टिफिकेट enhance the credibility of the website and it will authenticate that website is secure and safe to visit. तो ये आपके क्लाइंट और कस्टमर के लिए एक अपील करता है. As and when you will get that SSL certificate for a year, automatically your URL will be comprises with one S. अभी तक S नहीं लगा आता था, लेकिन जैसे आप इसको S आप सर्टिफिकेट लेते तो एक S लगा हुआ आ जाता है और यहाँ पर आगे एक लॉक का सिंबल बना हुआ जाता है. जैसे अगर आपने यहाँ URL देखी होगी तो यहाँ पर HTTP के बाद S लगा हुआ है, cybercrime.gov.in लिखा हुआ है एड्रेस बार में, और उसके पहले एक लॉक का सिंबल बना हुआ है, छोटा सा ताला बना हुआ. ये कब आता है लॉक? जब आप SSL सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है आपकी URL के पहले, और HTTP के बाद ऑटोमेटिकली S लग जाता है. तो आपको ये भी कीप इन माइंड, आपको मेक श्योर करना है कि अगर कोई URL आपको आई है, if you got some link through unknown source or even the known source also, so whether if it is a website or web portal, so वो वेब पोर्टल पे SSL सर्टिफिकेट है या नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि HTTP के बाद S जरूर हो, और जब आप उसको एड्रेस बार में डालें तो वहां पर एक लॉक का साइन बना हुआ है. इट शोज दैट योर वेबसाइट इज all the more safe. I am not telling that these secure, because there is no, ऐसे we have find out few cases also जहां पर उसमें SSL सर्टिफिकेट था, उसके बाद भी उस वेबसाइट में there were some vulnerability was there, और वो हमने फाइंड की. तो ऐसा भी नहीं है कि केवल SSL सर्टिफिकेट ले लिया है तो आप सोचते हैं कि ये तो दी सिक्योर, अब इसमें तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता इस वेबसाइट का. सो इट इज नॉट लाइक दैट. It may be possible, there may be some vulnerability, लेकिन फिर भी 90 to 80% you can make assure yourself and other also that this website is a pretty good, safe and secure to access. आप इस पे जब इंटरेक्ट करेंगे, डेटा इसका देखेंगे, विजिट करेंगे, तो आपको कोई लॉस नहीं होगा. नहीं तो हम ऐसे घर क्यों जाएंगे जहां से हमको बीमारी आने का चांस होगा, तो फिर ऐसी वेबसाइट पे कोई जाएगा ही नहीं. इसीलिए कीपिंग इन दिस माइंड गवर्नमेंट, और अब तो ये हो गया कि मैंडेट हो गया, कोई वेबसाइट जब डेवलपमेंट होता है तो जो डेवलपर है वो उसको करके ही देता है. जैसे होता था ना पहले हमारे वहाँ हर साल RTO में एवरी ईयर वी यूज टू पे द रोड टैक्स फॉर व्हीकल. हम 1 साल का 2 साल का रोड टैक्स देते थे, फिर वो 3-4 साल का इकट्ठा हो जाता था, फिर हम भरते थे. अब क्या हो गया है, इफ यू आर गोइंग फॉर अ परचेस अ न्यू कार, मे बी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, तो आपसे लाइफ टाइम का टैक्स उसी टाइम भरा लिया जाता है, उसके बाद ही आपको RC बुक इश्यू की जाती है. तो वैसे ही अब गवर्नमेंट ने कर दिया कि अब तो टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वेबसाइट ही आपको SSL सर्टिफिकेट लेना ही पड़ता है, और अदरवाइज नहीं भी लोगे तो इट विल बी dangerous for both of you. Your data may be also stilled, and the people who are visiting to your website may be also in the unsecure mode. वो भी उनका डेटा, और जो unsecure होगा तो आपकी वेबसाइट क्यों विजिट करेगा. Then it will not solve your whole sole purpose that people may visit more and more to your website. क्योंकि ये माउथ पब्लिसिटी जाएगी कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे तो SSL सर्टिफिकेट नहीं है, S भी नहीं लगा हुआ रहा है, तो nobody will turn back or turn up to your website, and it will be spoil your whole objective to create that website. जब कोई विजिट ही नहीं कराएगा तो वेबसाइट बनाने का फायदा क्या. सो दिस इज देयर. तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए कि URL कितनी इंपॉर्टेंट होती है, URL के फैक्टर्स क्या होते हैं, और कब उसमें S लगा पाता है, क्यों लगा पाता है. सो आई थॉट कि आपको जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा. एनीथिंग आपको any doubt related to this? If you have some doubt related to this URL, and you can ask now. Otherwise, we will go for another thing.
Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So do you have any doubt or any confusion or any query? You can ask. Sir, I have a question, sir. Please, please. When it comes to cyber security, then two nations come on top, that is Estonia and Denmark. Yes. So, so what make it difficult for our country to adopt that model and implement in our country, so that we can stop these crimes or at least minimize these, because day by day we are becoming the capital of cybercrime. So you have to think in that sense also. The country which you are specify the name of both the countries, how much population they have. We have We are one hardly 20 or we can say 15 crores or 10 crores. We have 130 crores people available. And India has more than 93 crores internet users. And in out of 93 crores or more than 90 crores, 70% of that population residing in the rural area, or we can say the interiors. So they using the technology, but they do not know the law. They do not know the, because they know the this device, green and red button, and somehow they are using some Google Pay, and somehow they are using some WhatsApp, but they are not technically sound, and they are not, and nobody is going there and teach them that this is the law, this is the technical thing which you need to take care. This is not the device which you can't even that unattended your device idle or without the security measures. So I hope I can even give you example, though you are taking this kind of workshop here, but how many of you are using the antivirus for your mobile phones? So till the time that kind of awareness is not coming in the citizens of our country, I'm not protecting or we can give you excuses, but gradually we will learn, because we are after the COVID era, we all duty bound to be online, foresee to be online, whether it is a Zoom meeting, whether it is a online survey, online meetings, online exams, online Google forms filling, online workshops, seminars. But the security measure we could not took at that time. Why so? Because we were at the foresee to be online, but this is the transition time, this is the high time to make our online presence more and more secure, as far as the law is concerned, as far as the technology is concerned, as far as the advanced tool is concerned. So the country which you mentioned the name of the country, the people are using internet very wisely. And still in the our country also, I am telling you, I am indulging myself more than 1 decade in this field of cybersecurity. Since 2011, I am working with the law enforcement agency, this kind of sessions and training programs for the police personnel. And then after the COVID, I started taking sessions in the universities and colleges, and I have conducted more than 540 webinars and seminars. But still, we are finding difficulties to make people aware that you have to make your online presence more secure. Still, I'm going and asking that how many of you are having antivirus? Because see, after the COVID, the paradigm is totally shifted. Earlier, we were using 70% of laptop and desktop, and 30% we were using only for the WhatsApp and Facebook, or few checking emails and sending mails for our research papers or receiving the research paper and conferences that we were using before the 2020. But after the COVID and 2021, the paradigm is totally shifted. Now 70% we are coming online through this device, mobile phone, and 30 or 20% we are just using laptop and desktop for making our documents ready. But interacting with this mobile is increased during past 3 years. But we could not make our handheld device secure.
because for the laptop and desktop we are using antivirus since so long. I am aware of that the first antivirus I have purchased in 2003 when I have Windows XP, the Norton antivirus. So since 20 years I am using antivirus for my laptop and desktop. But for mobile phones I could not, even though after the COVID 3 years we spent, but we are not thinking to safe and safeguard, secure my handheld device, which is 70% I am using online, and I am handling all my credential, whether it is LinkedIn, whether it is a Instagram page, whether it is a Facebook page, whether it is my WhatsApp group, with this handheld device. But I am not making secure this device with the antivirus. So, and after the conducting so much of awareness, I used to tell the people the 80% of cybercrime was cured by only awareness of the individual. Use the common sense, that's it. Then it will be curable. But still people are using more and more technology, but we can say very reluctantly or irresponsibly. So this is irresponsibility. I am using this device, but I do not use antivirus for it. So naturally, one or another day, one or another month, one or another time, any malicious software may enter in my device and it will spoil my whole data. It will spoil my other credentials, other social media accounts also. And people got cheated through my account. Naturally, if somebody is having access of my WhatsApp or my LinkedIn account or my Facebook page, they may ask money from the people like you that I am Gaurav Rawal. I am keeping myself busy with the limited phone calls, and one of my relative, maybe my father, my mother, or anyone is in the hospital, and I need an immediate fund to for the conducting an operation for a surgery, major surgery, maybe open heart or whatever it is. If I if somebody send 100 messages to from my social media account after hacking my device, maybe 10 of you turn up and donate some 5,000, 2,000, 10,000, and it will be a huge amount of lakhs of rupees. So if I am having that antivirus in my device, so security is now the individual. That is why I told you that now the cybersecurity is the individual's responsibility. No government will come and say you, because since last 20 years we are just running. Government is not only the cybersecurity. I am telling you another example. Since last 20 to 25 years, still government is running a campaign for polio mukt Bharat. Still people are not coming. दो बूंद जिंदगी की, the Amitabh Bachchan and Mr. Amitabh Bachchan and other Bollywood stars are coming and making a campaign कि आप पोलियो की दवा पिलाइए. Still, since last 220, the polio is no more there since last 2 decades in various country in the world. But in our country, because we have a huge population, developed country does not have that kind of hurdles or struggles or challenges which we have. We are underdeveloped country. We are in the process to develop. So we have here the mindset of people are different कि नहीं नए बच्चे को even in the rural area नहीं कोई दवा नहीं पिलाना, और बल्कि इंजेक्शन लगाया था. तो एक होता है ना हमारे वहाँ वैक्सीन के बाद सेकेंड डे इट्स नॉर्मल फिनोमिना कि वो फीवर आता ही है. लेकिन स्टिल इन रूरल एरिया लोगों को यह था कि बस इंजेक्शन लगाते ही इसको बुखार आ गया तो और बीमार हो गया हमारा बच्चा, तो कोई दवा नहीं पिलानी, कोई वैक्सीनेशन नहीं. सो दिस, जब तक मेंटालिटी हमारी नहीं बनेगी, सिक्योर मेंटालिटी नहीं बनेगी, जब तक हमको फेथ नहीं. इवन आफ्टर द कोविड आल्सो पीपल आर जस्ट अफ्रेडिंग एंड मेकिंग रूमर्स अबाउट दैट कोविड शील्ड एंड देन डिफरेंट वैक्सीन जो हमने लगाए कोविड से बचने के लिए कि अरे वो लगाने के बाद तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, हम तो लगाएंगे ही नहीं. 1 साल तक लोगों ने लगाया नहीं. So we are still struggling with the, because jab tak koi, see in our country, in our state, I belongs to the city and I proudly say that we are the India's cleanest city since last 8 years. Every year we got the award of clean city of India. So ये कहाँ से आया क्लीन सिटी का इंडिया कॉन्सेप्ट? क्योंकि हमारे यहाँ पर होता है कि इवन वी गो टू अनदर स्टेट, अनदर कंट्री, अनदर सिटी, if we purchase a packet of chips and wrapper, हम जगह ढूंढते कि इसको कहाँ फेंकें. If we could not find a place, हम उसको तब तक हमारे पॉकेट में कीप करते रखते हैं. नहीं, हम ऐसे नहीं फेंक सकते रोड पे. So
until unless the common people, citizens, is not having that kind of sense of responsibility. I'm giving you example, not तब तक वो नहीं आएगा. तो सेम केस विद द साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो. द सिक्योर माइंडसेट तब तक नहीं आने वाला. तो हम इतने एजुकेटेड होने के बाद भी इतना सब, हम ओटीटी पे तो इतना प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, इतनी ऑडियंस को कर रहे हैं, लेकिन तब तक वो सिक्योर माइंडसेट जब तक कॉमन मैन में नहीं आएगा, तब तक हम उसको अचीव करने में थोड़ा सा वी विल फेस द डिफिकल्टी. तो still we are struggling, and we are doing, and we are hopeful that one day we will be very reduced, and we are not coming in that country list, which the epitome of the cyber threats and cyber frauds. Unfortunately, still we are having that in the list, top of the list, in that top on this list. So I am hopeful that the people like you and me will make a change, and our students will make a change and make a difference definitely one day. So we are hopeful, and we are trying our level best. So that's why this kind of programs are meaningful, that each and everyone supposed to be a cyber soldier or cyber warrior on their own campus, on their own office, on their own family, or own community. One started making people aware of those kind of things. Definitely one day we will achieve that. So anyone else wish to ask something? Or shall we wind up the session? Yes, someone raise the hand. So shall we wind up the session? Okay, thank you so very much. So we will meet tomorrow with the new topic, and then we will discuss about a few more things related to cyber security and then capacity building. So till then, bye. Jai Hind.